Hi everyone, welcome back to the channel. Today we're going to begin with the second chapter of Laxmikant, that is Making of the Constitution. इस चैप्टर को मैंने थोड़ा रीअरेंज करके क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाया है so that it's better to understand and easier to learn as well. The basic story or synopsis of this chapter is the entire story from experts committee and the idea of constituent assembly to actually working of the committee to form the constitution and enforce and enact that at different points in time, and the story from India being a dominion legislature to a republic. That is what we're going to discuss here. So beginning hoti hai, the first topic here is experts committee of Congress. ये एक एक्चुअली ऐसी कमेटी थी जो कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ही बना ली सो एज टू डू सम सॉर्ट ऑफ होमवर्क, do some before hand research that could actually help the constituent assembly. If you go by the points, on 8th July 1946 Indian National Congress appointed experts committee to prepare material, notes, procedures, appointments, objectives, यानी होमवर्क, यानी लेट्स से वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस कलेक्ट करना, उनको स्टडी करना, इंडिया से रिलेटेड प्रोविजंस को उनसे डिराइव करना, ताकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इन मोनोटोनस कामों में टाइम वेस्ट ना करना पड़े. If you talk about the members of this committee, there were total 9 members, most important being Nehru, who was the chairman, and Krishna Kriplani, who was the convener. अगर हम बाकी members की बात करें, so they were Asaf Ali, Gopal Swami Iyengar, K.T. Shah, D.R. Gadgil, Humayun Kabir, K. Sanathanam, and K.M. Munshi. 9 members. But as I said, most important would be the chairman and the convener. सिर्फ 2 ही सिटिंग्स इस एक्सपर्ट्स कमेटी की हमने देखी, विच वेर इन दिल्ली इन जुलाई 1946 एंड बॉम्बे अगस्त 1946. अगर हमें इसे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट इस एक्सपर्ट्स कमेटी की इंपॉर्टेंस जाननी है, वी कैन गेट दैट फ्रॉम ग्रैनविल ऑस्टिन कोट, हु रोट अ वेरी फेमस बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, जिसमें उन्होंने कोट किया, इट वॉज द कांग्रेस एक्सपर्ट्स कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि इस एक्सपर्ट्स कमेटी की ही आइडियाज़ को यूज़ करके, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम किया, विच एक्चुअली पेव्ड द वे टू आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. So this is Granville Austin's quote regarding that, and this is the first topic, which was Experts Committee of Congress. Next up we see the demand for the Constituent Assembly और उसकी timeline. First idea, first time Constituent Assembly का जिक्र अगर किसी ने किया था वो था 1934 में M.N. Roy, who was a pioneer of communist movement in India. He was the first person to mention the idea or a demand for Constituent Assembly. Then in 1935, Indian National Congress officially demanded the Constituent Assembly to draft our own Indian constitution. And in 1938, we find Nehru's quote saying, Constitution of India must be framed without outside interference by a constitutional assembly based on adult franchise. तो इन्हीं डिमांड्स के चलते जब ये एक्सेप्ट की गई तो वी सी ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ऑगस्ट ऑफर क्या था? इट वाज स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स हु केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. रिमेंबर, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसकी बात हो रही है. तो उसी के ड्राफ्ट प्रपोजल स्टैफर्ड क्रिप्स ऑगस्ट ऑफर में लेकर आए थे इन 1942, जिसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज इट वाज द टाइम व्हेन मुस्लिम लीग स्टार्टेड डिमांडिंग अ सेपरेट पाकिस्तान. हाउएवर ऑगस्ट ऑफर में भी इस डिमांड को कुछ हीड नहीं दी गई, एंड द ब्रिटिश वेंट अवे विद द ऑलरेडी डिजाइन प्लान विच वाज टू ब्रिंग इन कैबिनेट मिशन इन 1946. कैबिनेट मिशन में वी हैव 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर, जिन्होंने कैबिनेट मिशन दिया जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. एंड इसने भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रिजेक्ट कर दिया, यानी फिर से मुस्लिम लीग की डिमांड को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई. नाउ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 बाय दिस कैबिनेट मिशन प्लान ओनली. नाउ हाउ, इसके अंदर टोटल मेंबर्स जो दिए थे वो थे 389 मेंबर्स. नाउ ये कैसे डिसाइड हुए 389 मेंबर्स? इट वॉज प्रोपोर्शनल टू 1 सीट इज टू 10 लाख पॉपुलेशन, यानी कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट थी इन दी असेंबली, विच मीन्स दैट एक्चुअल पॉपुलेशन इंडिया की अगर हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करें तो दैट वुड बी 389 सीट्स इंटू 10 लाख पीपल. दैट इज़ हाउ इट वॉज कैलकुलेटेड. अब इन 389 सीट्स को फर्दर बाइफर्केट किया था और उनसे मेंबर्स इलेक्ट हुए या नॉमिनेट हुए, जो हम डिस्कस करते हैं. इन 389 मेंबर्स में 93 मेंबर्स वर फॉर प्रिंसली स्टेट्स, जो मेंबर्स नॉमिनेट किए गए. प्रिंसली स्टेट्स वो राज्य थे जहाँ पर राजाज, महाराजाज, राजकुमार, प्रिंसेस, इन लोगों का अभी भी रूल था. राजघराना, फैमिली, हेरिडिटरी रूल जहाँ चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अपने राज्य से किसी को नॉमिनेट कर दीजिए अपनी मर्जी से, राइट. एंड द रेस्ट ऑफ 296 सीट्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ था. 92 सीट्स फॉर प्रोविंसेस, देवर 11 प्रोविंसेस उस टाइम पर, एंड देवर 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस. इनके नाम इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ एक, देन कुर्ग, एंड दिस इज़ नॉट, इट इज़ ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिस वॉज द 4th वन. 4 चीफ इलेक्शनरी कमिश्नरी प्रोविंसेस. सो ये थे 296. अब इनसे कैसे इलेक्शन हुआ? इन 296 सीट्स को और भी
पैरेलली डिवाइड किया हुआ था मुस्लिम, सिख्स और जनरल सीट्स में, एंड दे वर इलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंट्रोडक्शन होता है पहले, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उसे और एक्सपैंड कर दिया जाता है। तो इन्हीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं थ्रू द सिस्टम ऑफ PR एंड STV, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एंड दिस इज हाउ द members are elected to the Constituent Assembly from provinces. One important thing here is that कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं दे आर नॉट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। इस पर बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो दिस यू कैन रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत ही लिमिटेड वोटिंग बेस था जिन्होंने इन 296 सीट्स पर इलेक्शन किया, एंड दिस इलेक्शन वाज हेल्ड इन जुलाई ऑगस्ट 1946, एंड दिस वाज द रिजल्ट। 208 सीट्स टू कांग्रेस, 73 सीट्स टू मुस्लिम लीग, एंड 15 वर इंडिपेंडेंट मेंबर्स। हाउएवर जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी थी वो फिल नहीं की गई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने दे वर नॉट ready to be part of the Constituent Assembly. However, we see that after partition, they joined the Constituent Assembly. So that is fine. Now, after partition, obviously the country got divided. So the Constituent Assembly had to be divided as well for two different countries. So these 389 seats were now reduced to 299 seats for India. तो बाकी सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान चली गई, और इसमें से अब 229 सीट्स प्रोविंसेस के लिए थी और 70 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए, जो कि बाद में फिल हो गई थी पार्टीशन के बाद उन मेंबर्स से। सो दिस इज़ हाउ वी सी द कॉम्पोजिशन इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि उसके मेंबर्स कौन थे, कैसे आए। सो दिस वाज द कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट अप वी सी वर्किंग ऑफ द असेंबली, हाउ डिड द असेंबली गॉट टुगेदर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, विच वॉज बॉयकॉटेड बाय मुस्लिम लीग, क्योंकि अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ था तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। नेवरदलेस, अगर हम इनके इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करें तो सचिदानंद सिन्हा वॉज अ टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट। जैसे होता है ना, इंटरिम स्पीकर होते हैं या पुराने स्पीकर ही जब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक न्यू इलेक्शंस के बाद न्यू लोकसभा का स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए, ताकि बिकॉज एन असेंबली, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एनी कमिटी कैन नॉट वर्क विदाउट अ हेड। सो सचिदानंद सिन्हा वॉज मेड द टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट यूजिंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। इस पर कुछ एलैबोरेशन नहीं है एंड आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, फ्रेंच प्रैक्टिस से इन्हें सिलेक्ट किया गया था सचिदानंद सिन्हा को एज अ टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट। And after we see that Dr. Rajendra Prasad was the permanent president or chairman of the Constituent Assembly, right? Then there were two vice presidents of the Constituent Assembly, H.C. Mukherjee, Harish Chandra Mukherjee, and V.T. Krishnamachari. Spellings are Krishnamachari, right? Next is Dr. B.N. Rao, who was the constitution or the legal advisor, H.V.R. Iyengar, the secretary, S.N. Mukherjee, the chief draftsman, and now these are like tricky people. इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज इन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रोल नहीं था. दीज वर द आर्टिस्ट्स. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा was the calligrapher for the constitution who wrote that flowing italic style, यानी कि जो प्रिंट हम देखते हैं वो एक्चुअली हैंड रिटन है, जिसे लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इन इंग्लिश, एंड हिंदी वर्जन को कैलीग्राफी में लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य जी ने. और इसी के साथ जो हमने वहाँ पे इलस्ट्रेशंस देखी, बॉर्डर्स पे पिक्चर्स हैं, दे आर गिवन बाय नंदलाल बोस एंड बिहोर सिन्हा. बिहोर सिन्हा स्पेसिफिकली फॉर द प्रीएम्बल एंड नंदलाल बोस इज अदर डेकोरेशंस एज वेल फॉर द हिंदी वन. सो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन लुक्ड. इनका रोल उसमें था, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द of the constitution में. And if we talk about the symbol of the Constituent Assembly, that was an elephant, or the seal of the Constituent Assembly, that was the elephant. This was the members or the working of the assembly, right? Now if we talk about the beginning of the work, one important thing which we have to discuss is the objectives resolution. Now just as the name suggests, it was a resolution which talked about goals, aims, objectives of the Constituent Assembly, which was presented by नेहरू. 13 जनवरी 1946 को वो प्रेजेंट करते हैं, एंड 22 जनवरी 1947 को इट इज़ अनोनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली. नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट द प्रोविजंस इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर यूनानिमसली एक्सेप्टेड बाय द असेंबली टू यूज़ देम, टू टेक आइडियाज़ फ्रॉम देम. यानी कि वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करेंगे एनी विच वे. तो हम बाद में देखते भी हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर हम इन्फ्लुएंस की या यूज़ की बात करें तो इट हेल्प शेप द कॉन्स्टिट्यूशन एज विल सी, एंड इट वाज आल्सो मॉडिफाइड टू फॉर्म द प्रीएम्बल. If we see the wordings of objective resolution and compare it with the wordings of preamble, we will see that there are a lot of similarities which make us know that it was objective resolution on which the preamble was based. Now I'll discuss with you the 8 major provisions of the objective resolution. First one is India as independent sovereign republic. Now as we see sovereign republic, these are the words we find in the preamble as well.
Next, territories willing to join India shall be union. Again, Article 1 of the Constitution क्या कहता है? India, that is Bharat, shall be a union of states. Territories shall be autonomous units together. Federalism follow करता है India. Then power and authority derived from the people. Again, the preamble. First line क्या कहती है? We, the people of India. So the power and authority of the preamble and the constitution is actually the Indian people, the citizens. Next is guarantee justice, social, economic, and political, equality of status and opportunity, and equality before law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, association. Now, these are all the provisions we find in preamble, we find in fundamental rights, or we find in DPSP. So, in sabka idea was actually the objective resolution. Then, adequate safeguard for minorities. Again, we have that in fundamental rights. Maintain integrity of the land. We have that in the preamble. We also have that in fundamental duties. Contribute to world peace and welfare of mankind. Again, we have that in fundamental duties. So this is how we get to know the significance of objective resolution, that this is how useful it was, which helped shape the constitution and its ideals, and it was also modified to become the preamble. और preamble कितना important है वो हम discuss करेंगे in the chapter called preamble. So yeah, this was the objective resolution. The next topic is changes made by Indian Independence Act 1947. Now, I hope आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्राउन रूल की लास्ट लेजिस्लेशन थी, जिसमें इन्होंने एक्चुअली अपनी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटी को अबॉलिश कर दिया, रिमूव कर दिया, एक आध इंस्टीट्यूशन को छोड़कर, और इंडियन लीडर्स को, उनकी जो उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उनको पावर्स सौंप दी. तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस में भी बहुत बड़ा बदलाव आया था. फर्स्ट प्रोविजन इज़ दैट असेंबली वॉज मेड फुल्ली सॉवरन, यानी कि असेंबली के काम में कोई भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नहीं थी, कोई भी ब्रिटिश दखल अंदाजी नहीं थी, कोई ब्रिटिश मेंबर नहीं था. एंड देन अनदर वाज दैट मुस्लिम लीग मेंबर्स वर रिमूव्ड, एज वी हैव सीन कि 389 मेंबर्स से हमारे पास सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए थे. तो वो भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में डिस्कस्ड था, ये आफ्टर पार्टीशन आई थी. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इसका था वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस. इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 फंक्शंस दिए जिन्हें हम पैरेलली डिस्कस करेंगे ताकि हम कंपैरिजन ड्रॉ कर सकें. तो फर्स्ट इज़ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता ही है, जिसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाई, और साथ में इनैक्ट ऑर्डिनरी लॉ एंड बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट. इंडिया में इलेक्शंस नहीं हुए थे और ब्रिटिश जा चुके थे, तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी तो एक अथॉरिटी, एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी. तो वही इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, एंड इट बिकेम द पार्लियामेंट फॉर फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ आर डोमिनियन लेजिस्लेचर. नाउ भी डोमिनियन लेजिस्लेचर क्या है? सी, when Britishers were here in the country, we were a colony. When we had our constitution, we became republic. तो लेकिन जो बीच का टाइम है, जब ना ही हम कॉलोनी है और ना ही हम रिपब्लिक हैं, we were dominion legislature. So this is the idea. So उस टाइम पर जो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर था वो एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी, जिसका काम था कि ऑर्डिनरी लॉ को इनैक्ट करे ताकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तब तक कंट्री में केओस ना हो जाए. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 और हमारी पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग थी 17 नवंबर 1947. यहाँ पर चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पे हमारे जो हेड थे वो थे जीवी मावलंकर. क्योंकि हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी क्या होती है? स्पीकर की. ब्रिटिश पार्लियामेंट से आइडिया लिया था, तो जीवी मावलंकर वाज द स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट वाज एक्टिंग एज द पार्लियामेंट. इसकी लास्ट मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950 पे, एंड इसका लास्ट हुआ 17 अप्रैल 1952, बिकॉज इसके बाद हमारी न्यू फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई थी. राइट, दिस वाज द मेजर functions and the parallels which can be drawn regarding the Constituent Assembly's functions. कुछ other major facts Constituent Assembly के बारे में, that it had 11 sessions which were spread across 2 years, 11 months and 18 days. They studied 60 constitutions of different countries. The total expenditure was 64 lakh rupees. And ये लास्ट डेट 24 जनवरी 1950 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ व्हेन फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया गया था. राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और भी क्या काम किए? रेटिफाई किया कॉमनवेल्थ मेंबरशिप में 1949 में. ये हम प्रीएम्बल वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, सो लेट इट बी दैट वे. एंड अदर फैक्ट्स वाज दैट नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947. नेशनल एंथम जन गण मन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, द सेम डेट. एंड नेशनल सॉन्ग विच इज़ वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चैटर्जी, इट इज़ एक्चुअली द सेम पर्सन, ऑन 24 जनवरी 1950. यानी कि 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए, नेशनल एंथम भी और नेशनल सॉन्ग भी, एंड इट इज़ फ्लैग की ही अलग डेट है. So this was about the Indian Independence Act and major functions of the Constituent Assembly, and this is what we'll do in today's part. The rest of the chapter will be done in the second part, in which we'll discuss the committees and the very important topic of enforcement and enactment of the Constitution. So stay tuned for the next part. Thank you.